ओके टिके टेस्टिंग पर्पस पई जो पिला माने टिके साउंड करके टिके कहबे कि सुबुची ना नाही ताको टोन मत सुबुची ना नाही मो कथा सुबुची ना नाही सुबुची तो हेलो कोन तो नहीं तुम कथाटा मते सुबुची ना नाही तुम टे कहले मते एस तुम कथा सुबुची ना नाही तुम टे कहले मु सुनी परिबी यस सर ओके वेरी गुड ठीक अछि वर्तमान आज हमें पढ़िबा ऑपरेटिंग सिस्टम विषय रे ऑपरेटिंग सिस्टम को जिबा पूर्वरु हमें टिके पूर्वर आलोचना कर दबा कंप्यूटर बेसिक्स ऊपरे प्रथमे हमें जानिबा व्हाट इज कंप्यूटर किए कहि परिबो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर किए कहि परिबे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर टाइप करंतु व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर computer is a high speed electronic device pratham hela the speed of the computer is high speed electronic device. It is a electronic device. Computer is a high speed electronic device which makes arithmetic as well as logical calculations. प्रथम कथा हला कंप्यूटर कोन करे arithmetic क्लास का कैलकुलेशन करे एंड लॉजिकल कैलकुलेशन arithmetic and logical. What is arithmetic? Plus minus multiplication division percentage equal to is equal to ताको हमें कहबा arithmetic calculation और logical calculation होउची logical calculation is the calculation generally हमें से calculation को कहि परिबा logical calculation जोरा को if then for example तमरो बैंक रे डिपॉजिट करिचो जदी गोटे रूल हैला बैंक रे if your deposit comes if your bank balance comes less than 1000 rupees then 20 rupees per month will be deducted तनो सही सर जदी तमे एटीएम रु 10 थारु अधिक विथड्रॉ करूचो ताहेले तमरो पर नेक्स्ट ऑनवर्ड्स पर ट्रांजैक्शन 10 टंका नेखा कटि जीवो दिस इज कॉल्ड द लॉजिकल कैलकुलेशंस computer is a high speed electronic device which makes arithmetic and logical calculations takes the data as input प्रथम आर तीनोटी काम हुए डाटा इनपुट निए प्रोसेस करे और आउटपुट करे इनपुट रे डाटा हुए डाटा प्रोसेस हुए प्रोसेसर रे जोटी अछि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट combines two things one is ALU and CU this is the central processing unit CPU called ALU and CU प्रथम रे arithmetic and logical unit आउट आउची कंट्रोल यूनिट arithmetic logical unit और कंट्रोल यूनिट जनरली ए दिटे जिंस रे हमरा करा जाउछ तेनो कंप्यूटर तार जदि कंप्यूटर रो कंप्लीट डेफिनेशन हम जानिबा कंप्यूटर इज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच मेक्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस टेक्स द डाटा एज इनपुट प्रोसेस द डाटा एंड गिव्स द एक्यूरेट रिजल्ट टू द यूजर दैट इज द कंप्यूटर हम कहि परिबा दैट इज द कंप्यूटर प्रथमे तनो कंप्यूटर जानि साला परे हम जानिबा कंप्यूटर इज बेसिक जिंस डिवाइड इनटू टू टाइप्स कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स प्रथम होची हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रथम कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कहबा द पेरिफेरल्स ऑफ द कंप्यूटर व्हिच वी कैन टच एंड सी इज कॉल्ड द हार्डवेयर देन जा को हमें छुई परिबा जेमति हमें जिंस को देखि पारुचे आ छुई पारुचे दिस आर कॉल्ड द हार्डवेयर व्हाट इज द सॉफ्टवेयर the programming part of the computer the logical part of the computer the programming part of the computer is called as the software तो logical part को हमें जनरली कहबा सॉफ्टवेयर हमें कहबा तेनो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विषय क्लियर हे गला सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स प्रथम कथा हला सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथम ला सिस्टम सॉफ्टवेयर सेकंड हो जे एप्लीकेशन
सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर हम काउ कहबा द सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू रन द कंप्यूटर कंप्यूटर निजे चलिया पई जो सॉफ्टवेयर आवश्यकता करे दैट इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस जो अलगा किछि कंप्यूटर द्वारा हमें हमर काम करेबा पई जो सॉफ्टवेयर हम यूज करू ताकू कह जाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जदि हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दबा सिस्टम जो बूटिंग प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर होची ऑपरेटिंग सिस्टम दीज आर कमिंग अंडर द सिस्टम सॉफ्टवेयर देन व्हाट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो काम हम जदि एमएस वर्ड करचू टैली लोड करचू तादरे कोनोसी ए जो एप्लीकेशंस जो एप्स तमे प्ले स्टोर रे डाउनलोड करचो एप्लीकेशंस तमे डाउनलोड करचो दीज सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक अछि सब जानले क्लियर हैला ए पर्यंत एस नो चैट बॉक्स रे जणे दियो एस नो एस 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 निकी प्लस एस ओके फाइन तेनु हमें ओटा बेसिक जिंस जानले कंप्यूटर इज डिवाइडेड टू टू टाइप्स वन इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आउ प्रथम आसला सिस्टम सॉफ्टवेयर सेकंड आसला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तेनु ऑपरेटिंग सिस्टम इज कमिंग अंडर द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर which is used to run the computer निजे चलीबा पई जो सॉफ्टवेयर आवश्यकता होची दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर तेनु कंप्यूटर हमर आसला सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी रे आसिला तेनु हमें जानिबा एजी ऑपरेटिंग सिस्टम विषय रे जानिबा an operating system ताकू जनरली सॉरी an operating system ताकू जनरली हमें कहू OS generally कहो कोन OS operating system is the program that acts on the interface between the user and the computer hardware प्रथमे कोन है computer hardware is the physical thing is the dead thing ताकू एक्टिवेट करिया पई यूजर तादरे काम करिया पई जो प्रोग्राम यूज करा जाए that is called the operating system is the interface between interconnect करे hardware and the user हार्डवेयर संगे कंप्यूटर हार्डवेयर संगे यूजर सेतिबे काम करि परिबो जेते तादर ऑपरेटिंग सिस्टम लोडी परिबो तेनो हमें आउटा डेफिनेशन उटा सुंदर डेफिनेशन कहि परिबा जदि हम उटा क्वेश्चन पचरा जाय व्हाट इज द मिनिमम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर तेनो हमें कहिबा कोन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मिनिमम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर इट इज द vital component of the system software in the computer system application program requires an operating system to function तेणु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम जो जानले हमर निजर यूज पई बहुत प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज करबा से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज करबा से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हुए का ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऊपर रन करे का ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर रन करे सिस्टम सॉफ्टवेयर ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करे तेणु तमे जदि एग्जांपल जानिया चाहूछ तमे मोबाइल फोन यूज करछो तम एंड्रॉइड होची ऑपरेटिंग सिस्टम कारण एंड्रॉइड द्वारा तमे किछि काम करना किंतु तमर मोबाइल फोन टा स्मार्टफोन टा एक्टिव होबा पई काम करिया पई तमे त यूज परिवार यूज करिया पई जनरली कोन करा जाय एंड्रॉइड लोड करा जाय ता परे तमे प्ले स्टोर रु विभिन्न प्रकार एप्लीकेशंस डाउनलोड करो एप्स जा को हमें शॉर्ट फॉर्म रे एप्स कहू से सब को तमे यूज करो जनरली द ऑपरेटिंग सिस्टम आक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इट इज द ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर त माने इट क्रिएट्स अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर There some popular operating system Unix, Linux, DOS, Dix operating system, Windows and Mac OS. These are the some of the example of the operating system Unix, Linux, DOS, Windows and Mac OS. वर्तमान जानले operating system विषय then जिबा functions of operating system रो generally function कौन today most operating system inform the following functions प्रोसेसर मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन करे प्रोसेसर मैनेज करे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन करे प्रोसेसर मैनेज करे प्रोसेसर जो डाटा प्रोसेसिंग करिवो कंप्यूटर जो डाटा प्रोसेसिंग करो दैट इज मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट करे को मेमोरी को केते अलॉट करिवो केमिति ताको विभिन्न प्रकार मेमोरी आनी की पुनी प्रोसेस करिवो केते केते प्रोसेस करिवो स्पेसिफिक केते मेमोरी को अलॉट करिवो वर्चुअल मेमोरी को केते अलॉट करिवो से सब काम जनरली कोन करे ऑपरेटिंग सिस्टम करे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट ता माने कोन
कोरा इनपुट डाटा केते इनपुट हबो डाटा केते आउटपुट हबो केते वे हबो दैट इज मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली कोन हुए फाइल तमे ना चेंज करि परिबो फाइल को क्रिएट करि परिबो फाइल को एडिट करि परिबो सब इनसो करि परिबो फाइल मैनेजमेंट एस्टैब्लिश एन एनफोर्समेंट प्रायोरिटी सिस्टम डिटरमाइन द मेंटेन द ऑर्डर को सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम केते एग्जीक्यूट हबो तार ऑर्डर आ को फॉर्मेट रे generally say execute habo that is also defined by the operating system then आउरी कोन रहला इंटरप्रिटेशन ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस जनरली हमें जो कंप्यूटर को जो कमांड दो जो इंस्ट्रक्शंस दो सर जो एग्जीक्यूशन हुए सेना एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर ही हुए इंटरप्रिटेशन ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस व्हाट आर द कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस विभिन्न कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस हमें जो कहू प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कमांड हमें दो जते कमांड हमें लॉजिकल कमांड दो आ इंस्ट्रक्शंस विभिन्न पर इंस्ट्रक्शन दो दैट मे बी लॉजिकल दैट मे बी मैथमेटिकल facilitates easy communication between the computer system and the computer operator आउ computer system भितरे easy operation पई facilitate करे ताका भितरे combination करे तेनु केमति हमर ऑपरेटिंग सिस्टम काम करि परिबो ठीक अछि त माने फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन सब कोन हैला प्रथमे प्रोसेसर मैनेजमेंट कला देन मेमोरी मैनेजमेंट कला इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कला फाइल मैनेजमेंट कला एस्टैब्लिशमेंट एंड एनफोर्समेंट मैनेजमेंट कला इंटरप्रिटेशन कला बिटवीन इंटरप्रिटेशन ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस आ फैसिलिटेट कला कंप्यूटर सिस्टम आ कंप्यूटर ऑपरेटर भितरे इति बिकम द ब्रिज जेम हम जो कहतले ब्रिज क्रिएट कला नेक्स्ट टाइम तेनु ऑपरेटिंग सिस्टम केते प्रकार फंक्शन गला तापर हम जानिबा केते प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली केते प्रकार हम जानिबा ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कोन ऑपरेटिंग सिस्टम जतो प्रोसेस करे डाटा जतो आसे एकातर फ्यूज डाटा आसे सेटा को बैच वाइज प्रोसेस करे विभिन्न फॉर्मेट प्रोसेस करे जंती सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम अछि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अछि ता हमला बैच करके प्रोसेस करे then it is an operating system in which some type of process are batched together तनु किछ बैच करी जेंती गोटे क्लास रे किछ बैच करा होची एटा क्लास 12 एटा क्लास 11 क्लास 10 गोटे बैच करा होची तनु तार स्पेसिफिक देखि ताको बैच करे आ गोटे बैच को एट ए टाइम से तार प्रोसेसिंग करे दैट इज कॉल्ड एज द बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देन एज अ सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कोन सिंगल यूजर त माने यूजर गोटे से ऑपरेटिंग सिस्टम केवल गोटे कंप्यूटर रे लोड हे परिबो आ सिंगल टास्क तनो आमे जानि छ कंप्यूटर होची मल्टीटास्किंग किंतु जत नवा कंप्यूटर बाहर थिला जत प्रथम कर सिंगल टास्क थिला सिंगल टास्किंग थिला किंतु वर्तमान मल्टीटास्क तेनो जो ऑपरेटिंग सिस्टम सेतरे लोड हुए दैट इज कॉल्ड एज द सिंगल टास्क एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम देन आसीबो अनदर प्रकार आसीला सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे यूजर सिंगल यूजर आ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर जनरल हबो आ मल्टीटास्क मल्टीपल लोक तादरे ये करि परियो सिंगल यूजर आ मल्टीटास्किंग आ टास्किंग एट अ टाइम मोर देन वन टास्क से ऑपरेट करबो टू और मोर देन टू टास्क को गोटे कंप्यूटर करबो कारण कंप्यूटर नियम होउची ये सिंगल सॉरी मल्टीटास्किंग किंतु हमर ब्रेन जो अछि मनीषर ब्रेन होउची सिंगल टास्किंग एटा जानता मल्टी वी आर नॉट द मल्टीटास्किंग हमें केवल सिंगल टास्किंग ही करू आउ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सेही मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कोन एटा होची सेही ऑपरेटिंग सिस्टम जोटा जनरली मल्टी यूजर मल्टीपल यूजर माने जनरली आधरे ये करथांती माने मल्टीपल कंप्यूटर रे एटा लोड करि परिबा हम दैट इज कॉल्ड द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ए पर्यंत समस्त क्लियर चैट बॉक्स रे लिखि दियो हम आगु जिवा ठीक अछि नेक्स्ट को जिबा आउ टाइम बर्तमान सही टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रो आउटा सिस्टम आसिला
आउटा प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम होची टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। That is time sharing operating system. It uses the CPU scheduling and multi-programming. Time sharing on CPU, central processing unit, scheduling and multi-program to provide the each user a some portion of time. Example, जे टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग द लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग ता माने कोन टाइम शेयरिंग टाइम को गोटे टाइम को सेटा शेयर करी की सेटार ऑपरेटिंग सिस्टम रे सेटार प्रोसेस करे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेशन कोन जेतबे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रोल हैला कोन जेतबे हम टास्क गला माने इंस्टेंटली सेटा ऑपरेशन करिवो इंस्टेंटली ताको रन करिवो दिस द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तेणु रियल टाइम रो दी भाग रे विभक्त कराई छी गोटा हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटी दैट द क्रिटिकल टास्क कंप्लीट ऑन टाइम। हार्ड रियल टाइम माने कोन क्रिटिकल टास्क आसिला माने इंस्टेंटली से ताको सॉल्व करिवो इंस्टेंटली से ताको सॉल्व करिवो आउटा होची सॉफ्ट रियल टाइम इट इज द रेस रेस्ट्रिक्टिव इन द क्रिटिकल रियल टाइम टास्क गेट द प्रायोरिटी ओवर द ता माने से प्रथमे देखिबो जो सॉफ्ट रियल टाइम रे से देखिबो कोडा प्रायोरिटी जदी सेटा प्रायोरिटी तेनु ताको प्रायोरिटी बेसिस ताको इंपोर्टेंस देकी ताको जनरली सॉल्व करिवो। देन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जाको को जाय कोन NOS NOS जनरल ताको को जाय NOS दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS। से प्रथमे जेते ऑपरेटिंग सिस्टम विषय हम जानले सेटा होची स्टैंड अलोन कंप्यूटर गोटिए कंप्यूटर रे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हबो किंतु जते गोटा बड़ नेटवर्क थिबो जोटी सर्वर थिबो बहुत गुटे क्लाइंट थिबे सेरा कनेक्ट हेतिबे इंटरनेट रे कनेक्ट हेतिबे विभिन्न टैब विभिन्न कंप्यूटर्स रे कनेक्ट हेतिबे सेतबे गोटे नेटवर्क से माने बिल्ड करंती। व्हाट इज द नेटवर्क? नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ multiple computers connected each other with a server जेतो सर्वर रे से माने कनेक्ट हुअंती multiple computers are connected each other to share the information and the resources। प्रथम कथाला से माने इंफॉर्मेशन शेयर करंती डेटा शेयर करंती प्लस रिसोर्सेस भी शेयर करंती। रिसोर्सेस अर्थ प्रिंटर स्कैनर जो सब कंप्यूटर डिवाइसेस रहिला कंप्यूटर रिसोर्सेस रहिला पेरिफेरल्स ऑफ द कंप्यूटर रहिला ताकू भी समान करंती कारण गोटे ये रे मनको 50 टा कंप्यूटर अछि प्रिंटर गोटे हेले चलिबो कारण कंप्यूटर को जदी हमें रिसोर्स को प्रिंटर इज ए रिसोर्स जदी से रिसोर्स टा को हमें शेयर कर दबा विभिन्न कंप्यूटर विषय रे तनो सब कंप्यूटर पई जनरली प्रिंटर दकाने गोटे प्रिंटर रे हमें काम करि परिबा तनो सेठी जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा जाय दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम that is called the network operating system that is called the NOS। it runs on the server and provide the server capability to manage the data user। एटा कोन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर रे ही चले कोन से क्लाइंट रे चले ना क्लाइंट होची कोन स्टैंड अलोन कंप्यूटर तेनु सर्वर रे चले NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कोतर चले ओनली सर्वर रे चले to is has the capability to manage the data and user groups security chapter applications and other networking functions। प्रथम कथा हला ये कोन मैनेज करे ये डेटा को मैनेज करिवो यूजर को मैनेज करिवो ग्रुप को मैनेज करिवो सिक्योरिटी कथा देखिवो एप्लीकेशन मैनेज करिवो आ अदर नेटवर्किंग फंक्शंस भी देखिवो पेरिफेरल्स ऑफ द कंप्यूटर को मैनेज करिवो ता माने कोन मेजर रोल होची नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रो सब क्लाइंट मान को से मैनेज करिवो आ सब ओवरऑल सेमती घरे जने थांती बापा जेमती छांती मुरबी ये होची घर मुरबी से डिफाइन करिवो जे का को को जिंस अलर्ट करा जिवो का को करा जिवो केनी मैनेज करे सेटा करा दे। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अलाउ द शेयर फाइल प्रिंटर्स तार प्राइमरी पर्पस कोन नेटवर्क करबा द्वारा हमको बहुत गुरे रिसोर्सेस दकाने गोटे रिसोर्सेस को हमें समस्त यूज करि परिबा तार अर्थ होची अलाउ द शेयर द फाइल्स प्रिंटर्स एक्सेस अमाउंट ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हम कहउतली जे प्रिंटर स्कैनर जो सब मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइसेस रहिला से डिवाइस सब को जनरली लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क रे इसो करा जाय। तेनो एमएस विंडो सर्वर नोबेल नेटवर्क दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द नेटवर्क
ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रो एगुरा सब एग्जांपल जनरली अछि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एटा सर्वर रे जनरली यूज करा देन असला यूजर इंटरफेस A user interface refers to the part of an operating system program device that allows a user to enter and receive the information. It is text-based user interface, displays only text and is commands usually type of the command line on the keyboard. User interface कौन? आमर user सांगरे केमिति interface करिवो user केमिति interface करिवो कंप्यूटर रे ए जिंसटा एठी डिफाइन करा जाय. देन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तारे कोन करा जाय? जनरली कोन करा जाय? ग्राफ गोटे आसला कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कैरेक्टर user interface character user interface it is used to interacting with the software character user माने software संगरे by typing the command to perform the specific task कोन command character user interface रे command generally यूज करा जाय command यूज करा है कि हम जनरल कह जेम तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैला यूनिक्स हैला command द्वारा हमें कंप्यूटर को चले command द्वारा चले जो माने DOS जानि चंती यूनिक्स जानि चंती यूनिक्स रो यूज जानि चंती जेमते हम राइट हैंड साइड राइट क्लिक करी कि गोटे डायरेक्टरी क्लिक कर दो सकते एमडी मेक डायरेक्टरी चेंज डायरेक्टरी सीडी चेंज डायरेक्टरी एई टाइप रो करा जाय तेनो कमांड बेस्ड सीयूआई होची कमांड कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस आउट होची ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्तमान हम जो यूजर वर्तमान जो यूज करछु विंडोज दैट इज कमिंग अंडर द जीयूआई दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यार काम कोन हैला ग्राफिक्स माने माउस द्वारा आ प्रथम कथा हला कमांड यूजर इंटरफेस रे माउस रो कोनोसी काम नै माउस ही नै सेते कीबोर्ड द्वारा हमें कमांड द्वारा सब चलेबो किंतु एजार ग्राफिक यूजर इंटरफेस रे हमें कीबोर्ड यूज करबो माउस मध्य यूज करबो टच पैड भी यूज करबो सब जिंस यूज करबो तमने ग्राफिक्स हमें देखिलु आरी ऊपर क्लिक कर देलो आरी ऊपर से जिंस टाणी आनी कि सेते रखि देलो कि ताको कॉपी करी सेटी पेस्ट कर देलो ता माने ग्राफिकल यूजर द फंक्शंस बाय क्लिकिंग मूविंग द बटन्स आर काम कला क्लिकिंग मूविंग बटन्स आइकन्स मेनू means is the pointing device pointing करी कि हमें डिवाइस इज द मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी यूजर इंटरफेस ग्राफिकल तनो ग्राफिकल बेस्ड रे ए सब जिंस जनरली हेई थाय एरा होची ग्राफिक यूजर इंटरफेस ए पर्यंत आदर शॉर्टकट होची विंडो लिनक्स दीज आर द ग्राफिकल यूजर वर्तमान पिला माने वर्तमान जाके बुझी पारल ना नाही ठीक है मते फटाफट जणाई दियो चैट बॉक्स रे नेक्स्ट हम जिबा चैट बॉक्स रे जणाई दियो ले बुझिलती तुम स्पीकर ऑन करी कहि दियो कारण आज टेस्टिंग पर्पस करा होची तेनु तमे जत्ते कहि परिबो हमें जानि परिबो जे हम वॉइस सुबुची तम वॉइस सुबुची ना नाही साउंड ऑन करी कि तमरो माइक्रो जो ये थिबो ये पार्टटा जो साउंड पार्टटा ऑन करी कि म्यूट जोटा करिचो सेटा ओपन करी कि तमे कर दे परिबो ठीक है some of the important operating system आमे वर्तमान जानिबा किछि ऑपरेटिंग सिस्टम विषय रे किछि इंपोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम विषय रे जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली हमें ये करिछु ठीक अछि प्रथम हैला माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्रथम आसिला माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम it is a series of operating system produced by Microsoft Windows विभिन्न वर्जन अछि 98 XP 9 तनो विभिन्न प्रकार अछि Windows 11 अछि बर्तमान Windows 11 आसिलानी तनो Microsoft introduced the Windows in the year of November 20 1985 रिलीज कला बर्तमान Windows 11 चाछि बर्तमान ये होछि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भीतर आछि सेटा होछि it is done by it is created and it is the product of Microsoft Windows होछि the product of Microsoft ठीक अछि सेकंड आसिला एप्पल मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी जो ओएस यूज करूछि
जेटा को Macintosh generally को हाउची is the introduced Apple in the January 24 1984 84 रे तयारी करा गला Apple तयारी कला आ 85 रे Windows तयारी हला तेनो एटा मन रखिया दरकार 84 Macintosh Macintosh जो तयारी हला सेटा विशेष करी Apple मोबाइल फोन रे जो माने आईफोन यूज करछंती से माने ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर तापर थर्ड आसला लिनक्स आगु लिनक्स कहि परिबा लिनक्स भी कहउचंती इट इज a free and open source operating system developed by the Linux Torvald in the October 1991 ये 1991 रे डेवलप हला इटा जे हाई सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष करी सर्वर जगह रे हाई सिक्योरिटी लिनक्स यूज करा जाय ऑपरेटिंग सिस्टम हिसाब रे it runs most on the internet and the supercomputers linux hochi most higher secure higher powerful operating system generally सेटा इंटरनेट रे जो सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट रे सुपर कंप्यूटर रे जनरली ये करा जाए पानी टे हला एंड यूज्ड इन द सर्वर्स मोबाइल फोन्स एम्बेडेड डिवाइसेस ए सब जगह रे जनरली ए कंप्यूटर यूज करा जाए तेनो माइक्रोसॉफ्ट विंडो हला 1985 रे 1984 रे हला एप्पल मैकिन्टॉश 1991 रे लिनक्स आसिला तबरे आसिला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये आसिला यूनिक्स operating system it is the multitasking multi-user computer operating system that devices from the original AT&T Unix lab AT&T Unix lab द्वारा एटा तयारी हिची केन थॉमसन डेनिस रिची and other developers the Bell Labs research in the 1969 Linux जदी सबटर oldest operating system जदी आसिला सेदा होची Linux sorry Unix 1969 ने तयारी हिची तापर आसिला Solaris Microsoft it is a Unix based operating system it was originally by the Sun Microsystem 1992 रे Solaris तयारी कला that is called as the Sun operating system in the year 2010 it is acquired by the Oracle Corporation प्रथम कथा हला Sun Microsystem आको तयारी करथिला ताको Oracle Foundation ताको कोन कला ताको टेक ओवर कला इन द ईयर 2010 कला 2010 by Oracle Solaris तेनु दा ना दियाला Oracle Solaris किंतु सेटा प्रथमे थला Sun Microsystem रो Solaris तेनु Oracle Solaris हला तापर बॉस होची भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इज एन इंडियन जेन्युइन इनिशिएटिव आ जदी तम क्वेश्चन आसे जे भारत रो कोन ऑपरेटिंग सिस्टम तयारी दैट इज बॉस BOSS दिस इज द CDAC डेवलप्ड बाय CDAC customized by the suit the Indian digital environment it was during the January 2027 ने कला so the Indian language ये support करे सब Indian language को आउ boss 6.1 अनुप रिलीज हैला अगस्त 2015 ने boss होला तनो जदी क्वेश्चन आसे इंडियन रो कोन ऑपरेटिंग सिस्टम अछि दैट इज द boss BOSS वर्तमान जोटा अछि अनुप बॉस 66.1 वर्जन वर्तमान चलछि दैट इज कॉल्ड द अनुप ऑपरेटिंग सिस्टम तापर आसला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आमे जेमति कंप्यूटर पई ऑपरेटिंग सिस्टम आमे यूज करछु तेनो मोबाइल पई भी बहुत गुडी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा होछि से विषय आमे जानिबा it is special design for the to run the mobile devices तेम त मोबाइल ले तमे देखुछो Android is widely accepted तेनो मोबाइल ले प्राय तो तीन प्रकार मेजर देखाउछि गोटे होछि Android गोटा होछि iOS आउट होछि Windows आउट BlackBerry OS भी ब्लॉग होछि किंतु Android is maximum वर्तमान मैक्सिमम मार्केट कवरेज अछि Android रो तापर को iOS रो अछि तापर को Windows फोन रे भी अछि it is special design to run the mobile device such as mobile phones रे ये रन करिया पई ए ऑपरेटिंग सिस्टम तयारी हला इज द स्मार्टफोन PDS टैबलेट कंप्यूटर्स अदर हैंडहेल्ड डिवाइसेस जोटा हमें palm top जनरली जो हम यूज करि परिबो हैंडहेल्ड हाथे रे धरि परिबो सिमता डिवाइसेस रे जनरली यूज हला जे तो यूज हला
प्रथमे एंड्रॉइड गूगल तैयारी कला एंड्रॉइड रो जो जो ये डेवलप करिछि के गूगल एटा कोन लाइनक्स कर्नेल माने लाइनक्स द बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होछि लाइनक्स इन द सितंबर 2008 iOS के कला एप्पल यूनिक्स बेस्ड ये लिनक्स बेस्ड यूनिक्स बेस्ड जून 2007 ता माने प्रथमे iOS आसिला तापर को एंड्रॉइड आसिला विंडोज फोन माइक्रोसॉफ्ट कला 2010 ने कला तेणु सिम्बियन नोकिया कला सिम्बियन भी बाहर कला नोकिया दैट इज RTOS बेस्ड ऑन RTOS टेक्नोलॉजी ऊपर 1997 सबटा फास्ट बार करत 1997 रे टाइजन लिनक्स टाइजन विद यूनिक्स लाइनक्स कला से कंपनी ना होची लिनक्स और टाइजन मिसी कले जनवरी 2012 रे अब ब्लैकबेरी ओएस कला जनरली सैमसंग इंटेल ब्लैकबेरी मिसी की जनरली यूनिक्स यूनिक्स जनवरी 1999 रे एमाने सब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सब लॉन्च कले मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सब लॉन्च कले जो एंड्रॉइड iOS विंडो फोन ए सब ब्लैकबेरी ए सब ओएस सब कले एटा बेसिकली यूज करा गला कोठी मोबाइल फोन पई ऑपरेटिंग सिस्टम कारण तम मोबाइल फोन होची इटसेल्फ स्मार्ट सॉरी मोबाइल ला स्मार्टफोन होची इटसेल्फ ए कंप्यूटर तुम जा करि परिबो तम स्मार्टफोन भी ता करि परिबो थ्रू द एप्लीकेशन सेते भी सिस्टम सॉफ्टवेयर अछि विंडोज सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम अछि आ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सेते जनरली रहउछि बुझियला समस्त करो ए आंसर देले भल लागिबो समते बुझि पारलो देन MS DOS आमे बर्तन MS DOS जोटा कहती माइक्रोसॉफ्ट डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रथमे माइक्रोसॉफ्ट तैयारी कला MS DOS डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जोटा कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन x86 based personal computer it was most commonly used on family of operating system and is main operating 1980 এটা 98 mid 1990 जाके जनरली काम कला तेरा कोन कमांड बेस्ड देखो जेमती जेमती एति देखैछि एमएस डॉस कमांड एई टाइप रो ए स्क्रीन टा होछि एई टाइप रो कमांड देखि जे करबो तेनो स्ट्रक्चर ऑफ एमएस कोन ताते तीनटा फाइल जनरली रहिला ओटा होछि io.sys ms.sys आ command.com तीनटा फाइल को बेस करके जनरली करा गला io.sys इनपुट आउटपुट ms.sys माइक्रोसॉफ्ट DOS.sys और command.sys तेनो आ जो स्ट्रक्चर करा गला एई तीनटी सॉफ्टवेयर को नै करा गला आर जोटा रहिला आउ एटा ग्रेजुअली आस्ते 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 डेवलप होई कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को गला जोटा को विंडोज को आसिला प्रथमे MS DOS थिला डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम थिला तापर विंडोज को आसिला विंडोज जतो आसिला सेटा GUI मेथड रे आसिला जोटा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रे फाइल कोन DOS रे को फाइल ओटा हला एग्जीक्यूटिव फाइल .exe माने एग्जीक्यूटिव फाइल .exe जोटा देखिबो दैट इज द एग्जीक्यूटिव फाइल तादे क्लिक करले एग्जीक्यूट हो देन बैच फाइल आसिला is the file contain the series of DOS commands which is executed automatically batch file कोन एटा ऑटोमेटिकली एटा series of the commands जतो हम एंट्री करिवो सेटा ऑटोमेटिकली सेटा प्रोसेस हो एटा होची बैच रो सिंटैक्स होची .bat it is executed when the computer starts on the during the booting आउ auto exec.bat होची जतो बे कंप्यूटर बूटिंग करे सेतो बे एई फाइल टा रन करे आउटा होची बैच फाइल रहिला DOS रे कोन एग्जीक्यूटिव फाइल रहिला जोटा एग्जीक्यूट होबो बैच फाइल जोटा रन रे साहाय्य करिवो नो बैकअप फाइल्स दीज आर द बैकअप फाइल्स आर द एक्सटेंशन ऑफ backup.bat तबरा आसिला ये BAT बैच फाइल बैच वाइज प्रोसेसिंग होबो प्रोसेसिंग ने हेल्प करिवो बूटिंग प्रोसेस रे हेल्प करिवो आ बैकअप फाइल होची BAK आ एसो मन रखिया दरकार बहुत इंपोर्टेंट आ सिस्टम फाइल्स कोन have .sys होची सिस्टम एक्सटेंशन these are the programs files developed by the system control करिया पई कंप्यूटर को कंट्रोल करिया पई सिस्टम को कंट्रोल करिया पई ए फाइल सब डेवलप कराइची this is the they have the .sys extensions रे से मान का रहिला तेनु प्रथम कोन रहला एग्जीक्यूटिव फाइल रहिला
एग्जीक्यूटिव फाइल रहिला, बैच फाइल रहिला, बैकअप फाइल रहिला, सिस्टम फाइल रहिला. Then these are the some of the extensions. .BAK means it is important. এটা মনে রাখা দরকার. .BAK means আমি জানিবা backup file. backup এমতি মনে রাখি পারিবা. BAT মানে batch. BAT ର ପ୍ରଥମ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର batch. CFG ମାନେ configuration file. .com ମାନେ command file. .dat ମାନେ data file. .doc document file ଯେମିତି ଅଛି Windows document file, Word file सब DOC. .exe executive file. .inf होची information file. तो प्रथम तीनटा अक्षर प्राय तो सब जा रही अछि. .ovr होची overlay file. .prg होची program file. .txt होची text file. .cs होची system file. .zip होची zip file. जो फाइल को हमें zip करिबा unzip करिबा तेनु ए सब फाइल रे type of DOS commands. A DOS command can be defined as a particular program. देखो DOS program ए टाइप रो जनरली थाए. ए टाइप रो जनरली स्क्रीन टा रन करे is very difficult to work on the computer. हमें वर्तमान इजी रे हमें कंप्यूटर पढ़ी पारछु किंतु very difficult to work on the computer. DOS command can be defined as the particular program which helps the smooth operation of the computer system. DOS command divided into two types, internal and external command. D type रे जो command generally DOS रो अछि that is divided into two types. गोटे अछि internal command आउट अछि external command. तनो हम जाने internal command कोन आ external command कोन. These are the commands. Internal command हम कहू छै. Internal command होछि these are the command automatically loaded in the main memory during the booting process. कोन internal command कोन already computer भीतर थिबो computer run पई automatically सेगरा को process हवा पई generally कोन हबो main memory booting process हबो. आउट अछि external command. External command, these commands are not permanent part of the memory. Memory भीतर नथिबो computer भीतर नथिबो. The execute or command extension file is required. त माने तुमको command extension file जो पूर्व हमें पढ़ले command extension file बहुत गुडे पढ़ले से command extension file तुमको दबा पड़े. It is also called as the disk resident command. ताकू भी आउ अलगा फॉर्म रे कहै जाय disk resident command भी जनरल कहै जाय. तेनो DOS और कमांड दी प्रकार गोटे इंटरनल कमांड जोटा इंटरनली ऑटोमेटिकली बूटिंग प्रोसेस रे हेल्प करे रन करिया पई. ये जो एक्सटर्नल कमांड होची जो कमांड तुमको एक्सटेंशन गोटे यूजर को दबाउ पड़े. जो यूजर गोटे कमांड दबा पई एटा ये करिया पड़े. These are the some of the internal commands. Break call cd display the name of the change. Break कोन set the clears एरा सब जो माने प्रैक्टिस तमे करबो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS रे प्रैक्टिस करबो एरा सब देखो जेमति कहै छी md क्रिएट द डायरेक्टरी exit quit द कमांड exit मारले क्विट हे जिवो जनरल छक्की मार देले जेमति मल्टी जो क्रॉस मार देले हमर क्विट हे जाउ जेमति exit मार देले क्विट हे जिवो. dir डिस्प्ले द फाइल्स एंड सब ते कोन ब्रेक माने सेट द क्लियर द एक्सटेंस ऑफ कंट्रोल सी चेकिंग. कोन करो ब्रेक करबो गोटे लाइन ब्रेक करबो. कॉल ऑन द बैच प्रोग्राम विथ अनदर कॉल करिवो. cd display the name of the change of the directory. cls clear the screen clear पाई जदी हम स्क्रीन है क्लियर पाई cls मार देले क्लियर हेला. कॉपी फ्रॉम वन फाइल टू अनदर लोकेशन गोटे लोकेशन आउटर लोकेशन न पाई कॉपी कमांड यूज करा जाय. डेट डिस्प्ले द डेट एंड टाइम करिया पाई डेट सेट ऑफ डेट्स. del delete the more file जदी डिलीट मारी की कोनोसी डायरेक्टर नेम मारुछो सेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हे जिवो. dir display the list of files and subdirectories on the directory. exit कोन सेटा exit हे जिवो with the command.com program. md create the directory. md cd confirm the directory. path display the set of source path executive files. prompt माने जोटा दबदब होता है changes the DOS command prompt. rem record the comments. ren rename the file rename करिया पई फाइल पई ren यूज करा जाय. remove the directory माने rd. shift changes in the position of a replaceable parameter of the batch file. time display the set of system time. date display by date
अब टाइम पे टाइप होउची डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट फाइल बीआर होउची डिस्प्ले द डॉस प्रॉम्प्ट वर्जन एइटा सब विभिन्न प्रकार इंटरनल कमांड अछि जनरली डॉस रे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रे ए सब इंटरनल कमांड आर जनरली यूज करा जाए आउ भी बहुत गुड एक्सटेंशन कर एटीटीबी ये सब मन के पड़ो चेक डिस्क करे डिफ्रामेंटेशन जो कॉपी डिफ्रामेंटेशन करा जाए डिफ्रामेंटेशन अर्थ अलगा अलगा जगह सब हेकी पड़ी के अछि ताको हमें करिकी गोटा सेट करिकी गोटे जगह करबा जा द्वारा बहुत स्पेस हमें बंची परिबा स्कैन कॉपी गोटे डिस्क को स्कैन कॉपी करि परिबा डॉस की करि परिबा डॉस सेल फाइंड माने सर्च करिबा फॉर्मेट करिबा जदि हमें गोटे ड्राइव फॉर्मेट को राइट क्लिक करी फॉर्मेट कर देले फॉर्मेट हे जाउछ जनरल क्षेत्र फॉर्मेट कमांड दो पड़े प्रिंट करे गले प्रिंट दो पड़े प्रिंट जनरली करे पड़े रिस्टोर जदि फाइल रिस्टोर करछु बैकअप कला परे पुनी रिस्टोर करि परिबी जदि उड़े देछु ताको हमें रिस्टोर में स्कैन चेक द ड्राइव एरर स्कैन डिस्क अर्थ कोन गोटे ड्राइव रे कोन एरर अछि सेटा चेक में स्कैन डिस्क यूज करा जाय तबे ट्री ग्राफिकली डिस्प्ले द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड देयर पाथ जदि ट्री रे कोन करा जाय डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आउ द पाथ गुरा को जानिया पई जनरली ट्री यूज करा जाय एक्स कॉपी द कॉपी एक्सपेक्ट द हिडन फाइल माने एक्स कॉपी जदि मारुछु जत्ते फाइल थिबो सब जा कॉपी हे जिवो जदि किछि हिडन फाइल थिबो हिडन को रखा हेतबो सेटा कॉपी हबो नाही तेणु एही सब जनरली कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम रे यूज करा जाए और किछि टर्म हमें डिसाइड करिबा कारण कंप्यूटर ये रे सबठारु लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आसी तापरे क्वेश्चन आसे टर्मिनोलॉजी ऊपर क्वेश्चन आसे किछि टर्म हमें जानिबा ए पर्यंत समस्त क्लियर ते जणै दियो देखो जीबुटे एटा नै जो ये तो पुओ छाड़े जो एटा नै जो सुबु जो यस वेरी गुड तेणु आमे एटी जानिबा बैच फाइल कोन ए फाइल दैट includes the series of commands the series of commands one by one process hoji ताको जाय batch file bootstrapping is the process of starting an inactive computer using the small initial program bootstrapping कोन booting process the computer booting process होची initialization of program to load the other programs गोटे प्रोग्राम पर आउटा प्रोग्राम को लोड होची दैट इज कॉल्ड द bootstrapping kernel it is the core of the computer operating system is controls everything माने ऑपरेटिंग सिस्टम भितरे जोटा को सब जिंस कंट्रोल करे इट कंट्रोल एवरीथिंग इन द सिस्टम इट दैट कॉल्ड द कर्नेल तको को जाय एक्सटेंशन माने कोन जो फाइल को जानिया पई जेम .bat .exe .zip तनो दिस आर द एक्सटेंशन फाइल ठीक है एक्सटेंशन फाइल देन फाइल एलोकेशन टेबल फैट द टेबल यूज्ड टू ट्रैक द सेगमेंट्स ऑफ द फाइल एलोकेशन को फाइलटा को कैटेगरी जाउची ताकू ये पई फाइल एलोकेशन टेबल यूज करे फिल्टर कमांड ए कमांड दैट इज डिरेक्ट्स द इनपुट फ्रॉम द डिवाइस चेंजेस एंड सेंड्स द रिजल्ट टू द प्रिंटर डिस्प्ले फिल्टर कमांड कोन करबो ए कमांड दैट डिरेक्ट्स द इनपुट डिवाइस रो इनपुट नबो चेंज इट एंड सेंड्स इट टू द प्रिंटर फिल्टर फाइल करके वन बाय वन फिल्टर करके से पठेबो पाथ माने तो ओएस सीक्वेंस ऑफ पाथ डायरेक्टरीज जो पाथ रे माने करा गोटे फाइल गोटे डायरेक्टरी भीतर आउटा डायरेक्टरी अछि तबतर आउट अछि जोटा तमे क्लिक कला परे जोटा ऊपर देखा जाए स्लैश लगै कि माय कंप्यूटर स्लैश या कि माय डॉक्यूमेंट स्लैश या दिस द पाथ तनो से पाथ को हमें पहिले से फाइलटा पाइया पई से पाथ यूज करा जाए पाइप इस वर्ड मन रखिया दरकार ये सिंबल दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम डाइवर्ट द आउटपुट वन कमांड इट बिकम्स द इनपुट फॉर द आउटपुट पाइप कोन गोटिए कमांड रो आउटपुट गोटे रिजल्ट भाला सेटा फुल इनपुट हैला जेंति गोटे प्रोडक्ट तयारी पई गोटा प्रोडक्ट गोटे प्रकार प्रोसेस ही भाला सेटा आउ थरे प्रोसेस आउटा प्रकार हैला फिनिशिंग प्रोडक्ट हवा को तनो दैट इज कॉल्ड द पाइप ता माने गोटा पाइप रे से माने रहिले वन बाय वन रहिले तनो इट इज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम विषय आज हमें जानिले कोन कोन सब ऑपरेटिंग सिस्टम आ आगु को हमें चेष्टा करछु पैनल सब जा क्लास हबो तमे इंटरैक्टिव क्लास पाई परिबो बहुत ए करि परिबो जदि किछि का डाउट अछि पचारि परिबो टाइप करि परिबो क्वेश्चन टाइप करि परिबो न नाही विल एंड द सेशन
Okay, thank you very much.